Good evening to all of you. Welcome to Vidhi Pathshala. In this class, we would be going to learn about the banking. And in this series of the banking, now this is the part number 4 that we would be going to study. And one topic that is about the banking that we would be taking, Reserve Bank, and the related to that we would be studying today. Now this is our 101st class of the TNSCRT course and the 12th class economics we are doing. Now topics which we have read, now we have completed the introduction, we have completed historical development, we have completed commercial bank, we have studied the non-banking financial institutions, central bank we have completed. Now in the last class we have completed the Agricultural Refinance Development Corporation, Regional Rural Bank, NABARD we have completed in the last class. Now today we would be going to deal with the topic that is Reserve Bank of India and Industrial Finance. So in the upcoming class the rest of the topics would be covered. Now topics to be read today, these are Reserve Bank of India and the industrial finance. Now it has been categorized as the industrial setup. Then industrial setup has been divided into the two parts. Number one, which we would be going to study, is all India level institutions. Second, we would be going to study IFC. Under all India level institution, we would be going to study IFCI, that is the Industrial Finance Corporation of India. Then ICICI and IDBI, these three we would be going to study. And next is the state level institutions. So first, that is the State Financial Corporation, State Industrial Development Corporation, SIDCO. These we would be going to study today. Let's start with the first. Now first, the topic that we would be going to deal with is Reserve Bank of India and Industrial Finance. So आज हम पढ़ेंगे Reserve Bank of India और Industrial Finance. So the इंडस्ट्रियों को जो फाइनेंस है वो मिलता है कमर्शियल बैंक से. Now remember that the industries they get the finance through the commercial bank, but the quantum and the term it will be very much limited. So remember that ये जो है टर्म जो होता है इसका वो लिमिटेड होता है और क्वांटिटी भी जो है वो लिमिटेड होती है. Now commercial bank lend for the short term only, remember. Now what are these commercial bank? We have studied it earlier. Do revise your topics, as they get only the short term deposit from the public. Now further, the lending to the industry is only a fragment of the total lending by the banks. Now you would be thinking, why particularly we are studying about the industrial finance? Because if you remember that after the independence, India was majorly engaged in the primary sector, and to make India an industrial hub, or to bring the industrial revolution in the India, industries need to be set up. So इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए इंडस्ट्री लगानी थी. इंडस्ट्री जब लगेंगी जब पैसा होगा, when there would be money, और वो लोन देने के लिए there should be a bank. So these commercial bank they used to tend the short term loan. ये short term लोन देते थे. Now further lending जो इंडस्ट्रीज की थी वो कुछ ही फ्रेगमेंट की थी टोटल लैंडिंग ऑफ द बैंक. Hence there is a need and urgency of establishing long term credit. जरूरत पड़ी कि लंबे समय का जो लोन दिया जाए उसकी जरूरत पड़ी गई टू द इंडस्ट्री कि वो सेटअप कर सके. Now the institutional setup of India for financing and the promoting industries are as follow. So you can see it is that we have discussed earlier also, all India level, state level. In the all India level, IFCI, ICSCI and IDBI. At the state level, you have the State Finance
Corporation and the State Industrial Development Corporation. Now next comes is the All India level institution. Under that, first we would be going to study about the Industrial Finance Corporation of India. Now this was the first in the chain of the establishment of the financial corporation. So जो लगातार जो बने थे उनमें से सबसे पहले कौन था? That was the IFCI. Now it was made to provide the financial assistance. Now financial assistant for the इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब कि उद्देश्य क्या था कि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो, उसके लिए एक मैकेनिज्म हो जिससे उनको क्रेडिट अवेलेबल कराया जाए. दिस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द जुलाई 1st 1948 and it was established under the act of the parliament. Remember that IFCI provide assistance to the industrial concerns in the following way. Now it provides long term loan, now both rupee में भी और foreign currency में. दूसरा क्या है? Second is that the underwriting of equity, preference and debenture. Now we will be studying about these words later on कि equity क्या होता है, preference क्या होती है, debenture क्या होती है. Don't bother at this time. Now next comes is the subscribing to equity, preference and debenture issues. Fourth comes as the guaranteeing the deferred payment in respect to the machinery import from the abroad or purchased in India. What do you mean by deferred payment? Means that the guarantee देते थे कि हाँ जो बाहर से मशीन आई है उसका पैसा बाद में दे दिया जाएगा. Now money, if you have studied about the definition of the money's definition itself says that money is an instrument for the deferred payment. So barter system में deferred payment का थोड़ा मुश्किल है, but money is a medium of the deferred payment. Next comes is the guaranteeing of the loans that are raised in the foreign currency from the foreign financial institution. That is the fifth one, and these are the objectives of the IFCI. Now financial assistance of the IFCI can be availed by any limited company in the public, private या फिर joint sector में, or by a cooperative society incorporated in India. And that should be engaged or it should propose to be engaged. या तो engage हो या वो कहती होगी वो उस कार्य में engage होगी in the specified industrial activities में. Now such financial assistance will be available for the setting up of the new industrial project and also for the expansion, diversification, renovation, modernization existing ones also. IFCI also provide financial assistance on concessional terms also. It provide for setting up industrial projects. Now in the industrially less developed district in the states or the union territories that are notified by the central government. Now remember IFCI के पास पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से रेज करता है? IFCI raises its resources number one by issuing the bonds in the market. bonds issue करता है, पैसा जो है लेता है. Then next comes is the borrowing from the Industrial Development Bank of the India and the Central Bank. यहाँ पर अगर हम बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड एक इज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे कि बोरोइंग की जाती है. एक तरह से बॉन्ड इशू करके जो बैंक है वो जो है पैसा उधार ले रहा है. नेक्स्ट, फॉरेन क्रेडिट सिक्योर्ड फ्रॉम द फॉरेन financial institutions and borrowing in the international capital markets. Now next here comes is the Industrial Credit and Investment Corporation of the India, that is ICICI, and you have heard about it also, ICICI Bank. Now what are the functions of the ICICI Bank? Now the functions of the ICICI Bank is assistance to the industry,
provision for the foreign currency loan, merchant banking, letter of the credit, project promotion. I have made you understand these topics earlier. I hope you understand what is the letter of the credit. We have done it in the detail. So I told you, I gave the example of the Nirav Modi letter of the credit, housing loan, leasing operations. Now the it was set up on the 5th January 1955. ICICI, it was set up as a joint stock company on the advice given by a three-man mission. It was sponsored by the World Bank, the government of the USA, and the government of India. Remember that. The principal purpose of debt was to channelize the World Bank's fund, means the money that the World Bank is providing to the industries in the country through a channelized way, and also to help build a capital market. Now, initially, the capital of the ICI was held by the private companies, institution and the individuals. सो स्टार्टिंग में किसका पैसा था, कैपिटल किसके पास थी, इट वाज हेल्ड बाय द प्राइवेट कंपनी, इंस्टीट्यूशन एंड द इंडिविजुअल. बट इफ वी टॉक अबाउट नाउ, अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द इट्स इक्विटी, इट वाज held by the public sector institution, now such as the bank, it may be a bank, LIC, GIC and its subsidiaries, as the private institution was nationalized. So earlier it was a private bank in simple words. Now it has been made nationalized. The significant feature of the operation of the ICICI is foreign currency loan sanctioned by the institution to the industries. Now, since its inception, nearly 50% of its disbursement have been in the foreign currency. So 50% जो पैसा आया है वो विदेशी करेंसी में आया है, मुद्रा में आया है. Now, this is possible because of the facility it enjoys of raising funds in the foreign currencies. The World Bank has been the single largest source of the such fund. Since 1973, ICICI has entered the international capital market also for raising the foreign currency loans. Now, basically क्या था, World Bank जो पैसा दे रहा है to the people in the India or the industrialists in the India. So कोई guarantor होना चाहिए, कोई एक बीच में medium होना चाहिए. So this ICICI, it became a medium. The major portion of its rupee sources, it is raised by the debenture in the capital market. Now later we would be studying in the upcoming classes about what is equity, what is debenture, when we would be dealing with the share market. The ICICI also borrows from the Industrial Development Bank of the India and the government. The major portion of its assistance has gone to the private sector. तो मतलब मदद किसकी करी है इसने, मेजरली प्राइवेट सेक्टर की करी है. नाउ नेक्स्ट हेयर द थर्ड वन वी वुड बी गोइंग टू स्टडी अबाउट द IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. IDBI हैज बीन कंसीव्ड विद द प्राइमरी ऑब्जेक्ट, क्या था इसका उद्देश्य, क्या था, इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू मेक अ सुप्रीम बॉडी or the apex institution, and that apex institution can coordinate the activities of the other financial institution, including the banks. The development bank was wholly owned subsidiary of RBI. Now कब तक RBI की कब तक शरण में था, RBI के अंडर up to the February 15, 1976. Now later it was delinked from RBI with effect from 16th February, and it was made the autonomous corporation fully owned by the government India. So you have to focus, it is fully owned by the government of India, autonomous corporation. Now what are the function?
द फंक्शन ऑफ द आईडीबीआई दे आर टू फोल्ड, दो भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले क्या है, असिस्ट करना, असिस्टेंस, किन को असिस्ट करना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। दूसरा असिस्टेंट, मदद करना, डायरेक्ट मदद करना इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियल कंसर्न्स आइदर ऑन इट्स ओन और द पार्टिसिपेशन विद द अदर इंस्टीट्यूशन, या तो अपने आप करेगा या किसी की मदद लेके साथ में करेगा। It's now the IDBI can provide refinance in respect of the term loans to the industrial concerns given by the IFC and the SFC and other financial institutions that have been notified by the government, schedule bank and state cooperative banks. Now, इसका एक स्पेशल फीचर है ऑफ द आईडीबीआई इज दैट द प्रोविजन फॉर द क्रिएशन ऑफ द स्पेशल फंड एंड दैट इज नोन एज द डेवलपमेंट असिस्टेंस फंड। एक अलग तरह का जो एक फंड होता है जिसको कहा जाता है डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड। ये जो फंड है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि टू प्रोवाइड असिस्टेंस, किसको प्रोवाइड करने असिस्टेंस, इंडस्ट्रीज को, जिनको हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए विद लो एंटिसिपेटेड रेट ऑफ द रिटर्न। नाउ ऐसी इंडस्ट्री दे मे बी एबल टू गेट असिस्टेंस इन द नॉर्मल कोर्स। नाउ इन फाइनेंसिंग ऑफ द एक्सपोर्ट वाज आल्सो अंडरटेकन बाय द आईडीबीआई टिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो पहले उसका भी लेखा जोखा यही करता था, पर बाद में आईडी एक्सिम बैंक को बना दिया गया मार्च 1982 में। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड वी विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। अंडर दैट फर्स्ट वी वुड बी गोइंग टू लर्न अबाउट द स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, SFCs. Now the government of India has passed in the 1951 the State Finance Corporation and the SFC were set up इन द मैनी स्टेट्स। तो बहुत सारे स्टेट्स में हमने SFC को सेटअप करा। जो ये SFC हैं इनका मेनली उद्देश्य क्या है, डेवलपमेंट, किसकी डेवलपमेंट, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रियल यूनिट्स की, एंड उन्हीं के एरिया में, उन्हीं के स्टेट में। हावेवर कुछ केस में ये भी हुआ कि इसको एक्सटेंड किया गया है, एक्सटेंडिंग द बॉर्डर्स, मतलब कि दूसरे स्टेट्स में भी। जो SFC है ये प्रोवाइड करता है लोन एंड अंडर राइटिंग असिस्टेंस, किनको, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, हैविंग पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व, कितने से ज्यादा ना हो, 1 करोड़ से ज्यादा ना हो। नाउ द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी सैंक्शन टू इंडस्ट्रियल कंसर्न बाय SFC वो कितना है, 60 लाख है। नाउ SFC जो है वो डिपेंड करते हैं अपॉन दी आईडीबीआई पर, किसके लिए, रीफाइनेंस के लिए। सो रिमेंबर SFC जो है वो जो है हाथ फैलाते हैं किसकी तरफ, आईडीबीआई की तरफ लोन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज SFC कैन, इनको RRB की तरह मान लो, जो हमने RRB पढ़े थे वैसे ही यू कैन इमेजिन लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम दीज द SFC कैन ऑल्सो मेक टेम्पररी बोरोइंग भी कर सकते हैं from RBI and borrowing from the IDBI and by the state sale of the bonds. So इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, आपसे पूछ लेगा स्टेटमेंट में कि क्या जो SFC हैं वो टेम्पररी लोन ले सकते हैं RBI से या नहीं, मीन्स क्या वो लोन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। सो यू शुड रिमेंबर दैट। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट फॉर द टुडे इज दैट द स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको हम सिडको के नाम से जानते हैं। नाउ जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इसको सेटअप किया गया था स्टेट गवर्नमेंट, एंड ये जो ओनली ओन्ड होते हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि इनको सेटअप भी किया गया और इनके मालिक भी कौन है, राज्य सरकारें हैं। नाउ ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर नॉट मियरली फाइनेंसिंग एजेंसीज, they are entrusted with the responsibility of accelerating the industries of their state. इनका उद्देश्य है कि ये फाइनेंस तो प्रोवाइड करेंगी, इसके अलावा इंडस्ट्रीज को
अगले सत्र तक लेके जाएंगी। नाउ सिडको जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल कंसर्न्स को, कैसे? लोन गारंटी के थ्रू, अंडर राइटिंग के थ्रू, डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन के थ्रू टू द शेयर्स एंड द डिबेंचर। इसके अलावा ये जो है दे टेक वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटी, जैसे कि टेक्नो इकोनॉमिक सर्वे करते हैं, प्रोजेक्ट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ऑफ फीजिबिलिटी, कितनी फिजिबल प्रिपरेशन ऑफ द फीजिबिलिटी स्टडीज एंड सिलेक्शन ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। नाउ दीज दे ऑल्सो प्रमोट जॉइंट सेक्टर प्रोजेक्ट्स, उनको भी प्रमोट करते हैं किसकी एसोसिएशन के साथ? विद द प्राइवेट प्रमोटर इन सच टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट। सिडको टेक 20%, 26%, प्राइवेट को प्रमोटर टेक्स 25% ऑफ द इक्विटी। सिडको कितना लेता है? 26%, और को प्रमोटर कितना लेगा? 25% इक्विटी का, एंड द रेस्ट इज ऑफर्ड टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक। नाउ सिडको इट अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल एरियाज, कैसे? उनको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड व्हाट इज द वे? एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एंड इनिशिएट करता है न्यू ग्रोथ सेंटर्स। किसके थ्रू करता है इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज? इट डज थ्रू द न्यू ग्रोथ सेंटर्स के थ्रू। नाउ दे ऑल्सो एडमिनिस्टर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम्स, उनको भी जो है देखने का काम सिडको का है। सिडको जो है इट गेट रीफाइनेंस फैसिलिटी, किससे? IDBI से, एंड दे ऑल्सो बोरो फ्रॉम थ्रू द बॉन्ड्स, और एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट। सो ये बॉन्ड्स के थ्रू भी बोरो करते हैं और डिपॉजिट भी लेते हैं, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। सो दिस वॉज ऑल डेट वी हैव टू डू टुडे। सो वी हैव completed one topic. Thank you. And we have completed today the topic that is the Reserve Bank of India and the industrial finance. Now tomorrow we would be going to dealing with the monetary policy, recent advancement in the banking sector, money market, capital market. Now the new things that have come up, and that also we would be going to do tomorrow or the day after tomorrow.